Goals, SDG-16, Peace, Justice, and Strong Institutions, today here at Greenwich. This event is organized by the Thinkers Tribe, a youth led platform dedicated to fostering meaningful conversations and solutions for global challenges regarding sustainable development in collaboration with the Transparency International Pakistan. To start the program, I would like to call Mr. Hadi from Greenwich Admission Department to recite a few verses from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. This anthem is a collaborative effort of Greenwich University Media Team and Karachi Vocational Training Center, KVTC. ज़मीन शाद बाद किश्वरे हसीन शाद बाद तू निशाने अज़्मे आली शाद अर्ज़े पाकिस्तान मरकज़े यकीन शाद Thank you. Please be seated.
Greenwich University, together with KVTC, is working towards the betterment of the society and is enthusiastic towards making efforts for inclusive education. Let's have a look at this short documentary about Greenwich and KVTC.
The Sustainable Development Goals, or SDGs, were adopted by all United Nations member states in 2015 as part of the 2030 Agenda for Sustainable Development. They represent a universal call to action to end poverty, protect the planet, and ensure prosperity for all. Today, we are gathered here to discuss and explore various aspects of these goals and to inspire collaborative efforts towards their achievements. The panel will consist of representatives from Transparency International, United Nations Development Programme, SDG-16 Unit, Thinkers Tribe, and academia. The objectives of this panel discussion are to raise awareness about the significance of SDG 16 in the context of achieving the broader Sustainable Development Goals, to discuss the challenges and opportunities in promoting peace, justice, and strong institutions on a global scale, and thirdly, to inspire and engage our audience, including policymakers, academics, and thought leaders in meaningful conversations that can drive positive change. So before we move any further with the discussion, I would like to call Mr. Ali Jalani, Vice Chairperson, Karachi Research Chair and Director, Greenwich University, for a welcome address. Thank you, Rafia. First of all, my apologies कि जी हमने इसको delay start किया है. On behalf of the management at Greenwich University, I would love to welcome all of you, especially our friends from the UNDP, Transparency International, SIN, the SDGs unit, as well as our organizers of the event, Thinkers Tribe. हमारे अपने faculty members, बहुत सारे students from our own institution as well as others. I would love to extend a very warm welcome to you. Quickly, as part of this, it is my due to cover the institutional credentials in terms of what we do around the SDGs. तो हमारा यूं है जी कि जी it's not just an academic traditional university per se. 2018 में we were among the very first institutions जिन्होंने ये नीड रियलाइज की कि पाकिस्तान के अंदर जो रिसर्च और पॉलिसी प्रोसेसेस के अंदर गल्फ है बहुत बड़ा, उसको ब्रिज करने के लिए आपको कुछ थिंक टैंक्स की ज़रूरत है. और विच इज़ वाई देन वी वर द फर्स्ट in Pakistan to institutionalize a policy think tank here at Greenwich University, which is called Karachi Research Chair. हम लोग 2013 से इस प्रोसेस में थे. I was with another organization in the past, जहाँ से हमने जो MDGs का एक्सेलरेशन फ्रेमवर्क आया था, UNDP के दोस्तों को पता होगा यहाँ, उसके ऊपर हमारा कुछ काम था तब से. और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो फ्रेमवर्क बनाया गया और 15 में जब उसकी अडॉप्शन वगैरह हुई, तो वी वर पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस एज वेल. तो 18 में हमने इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया, जिसको हम कराची रिसर्च चेयर कहते हैं. वी स्पेशलाइज इन सस्टेनेबिलिटी. कुछ हमारी इसके हवाले से पब्लिकेशंस थी. बिल्कुल शुरू में पाकिस्तान का जो प्लानिंग कमीशन है, उसके साथ हमारी काफ़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन रही. पाकिस्तान का जो SDG प्रायोरिटाइजेशन टूल है, उसके बनाने के अंदर भी we were among the few people who were able to be part of the working group, and जो उसमें फिर हमने तीनों टीयर्स के हवाले से काम था वो किया. नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की तरफ से एक मामला आया था जिसमें इस प्रायोरिटाइजेशन टूल के हवाले से काफ़ी काम हुआ, जिसमें क्लाइमेट के ऊपर खासकर was one of the key emphases that we laid, और वो फिर जो है उसकी बुनियाद पे चीज़ें कुछ आगे बढ़ी. अच्छा, अब 3 साल से हमारा काम है. एक इदारा है जिसको कहते हैं एशिया पैसिफिक रीजनल CSOs एंगेजमेंट मैकेनिज्म. ये 650 के करीब इदारे हैं अराउंड 37-38 कंट्रीज से इन द एशिया एंड द पैसिफिक, जो यूनाइटेड नेशंस के साथ फॉर्मली एंगेज करते हैं अक्रॉस डिफरेंट इंटरगवर्नमेंटल प्रोसेसेस ऑन इंटरनेशनल डेवलपमेंट. तो हम अब इनके एक तो एडवोकेसी ग्रुप जो है उनका उसको लीड करते हैं, which basically sets the narrative on international development के हवाले से जो भी positioning होती है of the entire region, Asia and the Pacific. दूसरा ये है कि जी हम इनके लीड डिस्कशंस रहे हैं अक्रॉस डिफरेंट प्रोसेसेस, जिसमें जो सबसे बड़ी हमारी अचीवमेंट रही है वो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम जो हर साल रिव्यू करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्रोग्रेस को. उसमें वी विन द लीड डिस्कशंस फॉर देम. उसके अलावा जो मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन, और इस साल चूंकि 2 HLPFs हुए हैं, यानी एक HLPF जो होता है हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम, दूसरा कल परसों रात जो खत्म हुआ SDG समिट जिसको हाई लेवल सेगमेंट कहते हैं.
اس میں پھر یہ فرق ہے کہ جی آپ کا پولیٹیکل ڈکلیریشن اڈاپٹ ہوتا ہے، جس کی کرٹیک کو بھی اس دفعہ ہمارے کراچی ریسرچ چیئر نے لیڈ کیا ہے فرام اے پی آر سیم. اس کے علاوہ ہم جو اکنامک اینڈ سوشل کمیشن ہے یونائٹڈ نیشنز کا، اس کا ریویو تھا 2020 میں. اس کے علاوہ ان کے ایکسپرٹ گروپ کے کچھ کانسلٹیشنز وغیرہ ہوتی ہیں، اس سب میں ہم ان کے لیڈ ڈسکسنٹ کے طور پہ ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. وہ ہے جو پولیٹیکل ڈیکلیریشن کے حوالے سے نیگوسیشن تھی ابھی جنرل اسمبلی کی، وی ور دی لیڈ ڈسکسنس. اور یہ ہے جو ایشیا پیسفک کا فورم آن سسٹینیبل ڈیولپمنٹ تھا ان 22. سو وی ور دیئر آن گول 17. اچھا، اس کے علاوہ ابھی 2023 میں ہم نے پالیسی کوہیرنس فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، جو کہ آج کے ایونٹ کے ساتھ زیادہ ریلیٹ کرتا ہے کہ جی جہاں گورننس کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، تو اس میں ہم نے انوائٹ کیا تھا ایک انٹر گورنمنٹل پینل. اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ جی پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ملیشیا، ان سے ہمارے ساتھ کچھ احباب ہیں جو کہ ریپرزینٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ. ان کے جو پلاننگ کمیشن سے کوئی تھا، کچھ جو ہے وہ انٹر پارلیمنٹری یونین تھی، وہاں سے لوگ تھے. تو مقصد یہ تھا کہ جی جو 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپس بیک کا المیہ ہے ڈیولپنگ کنٹریز میں، اسپیسیفکلی ان دی ایشیا اینڈ دی پیسفک، اس کے اوپر بات چیت کی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ جی آگے اس کے کریکٹیو کوڈز کیا ہوں گے ٹو فکس اٹ. اچھا، ہمارا تھوڑا سا کام جو ہے وہ کچھ اس حوالے سے بھی ہے کہ جی ہم other than policy advocacy, we also try to make direct interventions across intergovernmental platforms، جن میں ایک ہمارا مثال کے طور پہ یہ ورکشاپ تھی آسٹریا میں جو ہم نے کی، جس کا مقصد تھا کہ جی جو نوجوان آپ کے ٹورزم کے حوالے سے یہ ایک یونیورسٹی کے اندر ہیں آسٹریا میں، پوری دنیا کے بچے تھے، کوئی 20-22 ممالک کے. تو ان کے ساتھ ہم نے انگیج کیا کہ جی پاکستان کا جب نام آتا ہے تو پہلا امپریشن سیکورٹی اسٹیٹ اور خطرے اور یہ وہ سارا کچھ آتا ہے. اب یہ وہ بچہ ہے جو کل کو آپ کا بیٹھ کے ٹورزم کی لیڈرشپ کے اندر کام کرے گا، دنیا کے لوگ جہاں بھی جانا چاہیں and so on so forth. So we try to also undo that security state impression of Pakistan کہ جی پاکستان ایک سیف جگہ ہے and people can come here. یہی وہ چیز تھی جو ہم نے 2018 میں جا کے جو آپ نے ڈاکیومنٹری میں دیکھا یورپین پارلیمنٹ کے اندر جو ڈائریکٹ انگیجمنٹ کیا ود پارلیمنٹیرینس، the focus was the same. اچھا، یہ ابھی ریسنٹ تھا ہائی لیول پولیٹیکل فورم 2023 جو ابھی جولائی میں ہوا 2 مہینے پہلے. تو ہماری ریپرزنٹیشن تھی وہاں ایز دا ریجنل اسپیکر فرام ایشیا اینڈ دا پیسفک. اور آئی ایم ویری گلیڈ ٹو نوٹ کہ مجھے تو جانا ہی تھا، لیکن یہ ہے کہ ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہیں رامین صدیقی، شی از سٹنگ ایٹ دا بیک. تو شی واز آلسو امانگ دا آئیکونک یوتھ کے بچے جو کہ وہاں جا کے جنہوں نے انگیج کیا، اینڈ شی واز پارٹ آف دا ڈیلیبریٹو فورمس. So it was quite an achievement for us. In that corner, we were also invited to speak inside the General Assembly on 19th, جو ان کا high level segment کی general debate تھی. اسی طرح کے سارے کام کی بنیاد پہ پھر یہ ہے کہ جی ابھی گلوبل ایک امپیکٹ رینکنگ کہلاتی ہے جو یونیورسٹیز کو اسیس کرتی ہے فار دیئر ورک آن دی SDGs. تو اس میں وی آر دی اونلی یونیورسٹی فرام پاکستان ٹو ہیو ایور میڈ اٹ ان ٹو دا ٹاپ 100 یونیورسٹیز اراؤنڈ دا ورلڈ آن نمبر 61st. تو یہ ہوا اس سال میں بیسڈ آن آور ورک. تھینک یو. اور اسی ایکسٹینشن میں وی ور آف کورس نمبر 1 ان پاکستان آلسو آن دیٹ نوٹ. تو دیٹس پریٹی مچ اٹ. آئی جسٹ وانٹڈ ٹو سیٹ دا اسٹیج فار یو کہ جی ہمارا کام ادر دین اے یونیورسٹی سسٹینیبلٹی کے حوالے سے آلریڈی بھی ہے، اور وی وڈ لو ٹو کولیبریٹ ود دا پیپل ہو آر ہیئر ان دس روم ان ٹرمز آف فیوچر وینچرس. آئی تھینک یو ویری مچ. Thank you, Mr. Jalani. Now let's start the panel discussion. On our panel, we have Mr. Kashif Ali, Executive Director, Transparency International Pakistan. So can we please have you on the stage? Mr. Ahmed Hassan from UNDP SDG Unit. Sir, please come on the stage. Ms. Sabina Abbasi, Development Expert. Mr. Ali Jalani, Development Practitioner. And Ms. Saima Khoro, Sustainability Expert. Ms. Mubashra Abid, Life Coach, will be moderating the session. Assalamu alaikum. How are you all? Okay, great. Okay, shall we begin? Are you guys ready? Okay, so my first question for all of you is, what is the significance of SDG-16 in the context of broader sustainable development goals? And why is it considered a foundation for sustainable development?
Now, why SDG 16 is important? You got a very good, I think, overview of what Sustainable Development Goals are. But just to quickly recap, there are 17 SDGs. Now, why do we call it a cross-cutting goal? Because if you look at the rest of the SDGs, all these SDGs talk about individual targets. So there is a SDG on poverty, there is a SDG on education, health, environment, partnerships, where the Greenwich is also leading the way. But all these goals, the individual targets and milestones and indicators that have been set at the international level for achieving these SDGs leading up to 2030, they all remain compromised by one issue. And I would just ask you, can you quickly guess what that one issue is? अगर हमने SDGs के ऊपर progress हासिल करनी है, what is the one issue that can compromise our progress on SDGs? And that is governance, right? Or agar aap governance ko bhi narrow down karen, we call it corruption, right? So SDG 16, in 2015, when these goals were being set up, the TI and UNODC were the lead organizations setting the discussion that we need a goal that sort of push a collective agenda. And all this, I think, all this thought process is very well reflected in SDG 16. So if you look at the targets, so that there is a 16.5 which relates to public sector corruption. There is 16.6 which relates to effective and accountable institutions. And then there is 16.10 which relates to public access to information. Now the idea here is until and unless you do not make sure that the institutions which are there to deliver equality for all in education system, which are there to deliver health for all, which are there to deliver just climate action for all, until and unless you won't be able to achieve these individual goals. So that's how the SDG 16 started. And I think in the follow-up discussion, I would like to focus on 16.5, 16.6, and 17 in particular, because these are the goals where TI particularly is leading the way. We release a corruption perception index every year, rank countries on how well they are doing in terms of fighting corruption and promoting effective, accountable institutions. Unfortunately, the story of Pakistan is not very good. In the last CPI that was released in 2022, both her ranking and score have declined on fighting corruption. So just to tell you, because a lot of you are from research method background, the way the CPI is calculated, so we use a scale of 0 to 100. The closer to 0 the country is, the more corrupt it is. The closer the country to 100 is, the more cleaner it is. The best score that we had on 16.5 SDGs, again related to corruption, was 32 back in 2018. Right now in 2022, our score is 27 out of 100. We have declined 6 spots, which is very significant statistically speaking, again, from the point of view of methodology. Our score at the moment is 140 out of 180 countries, which means if you deduct 140 out of 180, we are the 40th most corrupt country in the world. So that's where we are standing on SDG 16, particularly 16.5. We're working a lot in collaboration with the Ministry of Planning and Development. I think Ali Jalani pointed out to the HLPF. One of the things that we are doing, the HLPF is more of a federal level reporting. It's a G2G government-led process. There is no voice of the civil society. What TI does every year is we release a parallel reporting on SDG 16. And this parallel reporting gave a perspective of what the civil society thinks about the implementation of SDG 16. So I think I'll stop here and we will have more discussion. Thank you. Thank you so much, sir. Mr. Kashif Ali gave a very detailed and knowledgeable answer to this question, but anybody of you wants to add something to it? Assalamualaikum. My name is Her Excellency. I am called as Her Excellency Saima Koro. I am the Consulate of Foreign Affairs in the Kingdom of Numidia, East Africa. I represent African continent, 54 countries, and I connect 54 African countries with the United States African diaspora, and I am indulged in creating the trade and export activities in the whole entire African continent. My purpose to come here is that whatever I have done the efforts, I want to deliver to you all
to my students, like you all are my students, and I feel like I want to deliver something that can benefit you. So, when we talk about SDG, first thing is that what is Sustainable Development Goals? SDG stand for Sustainable Development Goals. But do you know what is sustainability? Any one of you can answer what is sustainability? Continuity. Anyone else? Excellent. Continuity, longer period of time. Very nice. Excellent. So sustainability is that, and that is continuous, that is for longer period of time, and that is universal to all. Like I in the rural area can access the same equal like demands, same equal facilities similar to the people that are rich and similar to the people that are poor. That is called sustainability. This is the reason we stress a lot on sustainable development goals. When we talk on equal approach, here comes the concept of sustainable development approach. And that sustainable development approach has by United Nations Annual General Theme 2030, it has 17 sustainable development goals. Now, in 17 sustainable goals, every sustainable goal is very important. But as every country has some limited resources, we can't handle all the principles of it, of the sustainable development goals. So that's why today we, as a Pakistani, as a Pakistan, we are focusing on sustainable development goals SDG-16. That is called peace, and the other is called, okay, and the other is all called, thank you. Thank you so much. Thank you so much, ma'am Saima. I think it's very detailed, and let's move towards the next question now. Okay, so my next question is for Mr. Ahmad Hassan. And since, sir, you are a monitoring and evaluation expert, my question for you is, how can civil society organizations, NGOs, and individuals contribute to the implementation and monitoring of SDG 16 at the local and national levels? First of all, thanks a lot for inviting me for the session. And essentially talking about the different aspects of this question, the question is broader, but basically what SGD does is that it brings together different stakeholders, which are the academia, civil society, private sector, and the government for collaborative engagement and planning around different goals and targets of SGDs. And obviously, talking in context of SDG 6, which focuses upon inclusive development, ensuring accountability, ensuring transparency, ensuring effectiveness in the planning of budgets. So obviously, there is contribution of civil societies in terms of how they can create synergies and dialogues at the local level with the local government administration and with the local community groups as well, to kind of provide evidence-based data in terms of issues which are faced at the community level and how those issues can be directed towards the policy makers at the district level and at the obviously union council level, and furthermore at the provincial level as well. But obviously it's a long process, and it would involve different kinds of collaboration, different kinds of engagement with different stakeholders, which might obviously take more than one step. And so that's essentially what it's about: collaborative planning, partnerships with different stakeholders, and how they can present and address different issues which are faced by the communities with respect to peace, justice, and strong institutions. So yeah, that's my take on that. Thank you so much, sir.
Okay, my next question is from Miss Sabina Abbasi. Ma'am, since you are associated with the educational sector at UAE, so my question for you is how education and awareness raising campaigns can help promote SDG 16 and engage citizens in its implementation. Thank you so much. I think I have also worked in development sector. I've been a part of these community-led initiatives. Worked a lot in Karachi in violent-prone communities I specifically work with women empowerment. And then I think every time I would enter a community or do a project, I think I always realize that at the end of the day, it's all about education and awareness, and not just any form of education because you'll notice that there are many educated people who are actually behind many of these violence and crimes and corruption that if you resort to shortcuts like cheating, and that stems to corruption, right? Your society is basically a reflection of your education system. And if this is what we're breeding, then obviously that's what you'll get. And the agenda that we're discussing, I think when you don't have governance and you have corruption, this is sadly what we're seeing in Pakistan. No skilled or qualified person will stick to this country, and they're all moving out because they need a thriving ground to flourish, right? In a country where might is power and not skill and qualification is power, then obviously all the educated people that we're producing, they will obviously not stay. So, which is why I think it's also our responsibility to actually respect rule of law, not resort to nepotism, which is I won't blame any one institute. It's literally everywhere, and even if we do some self-reflection, we also engage in that very regularly. So I think for me personally, it's all about reflecting of your own actions, and I think that's when true change will happen. Thank you. Thank you so much, ma'am. My next question is for Mr. Ali Jilani. Sir, since you're also an human rights activist, my question for you is how can SDG-16 targets and indicators leverage human rights norms, standards, and analytical approaches to inform the measurement, monitoring, and implementation of the SDGs? Thank you. Let me start with a bit of bad news, and then we can try to build as far as hope is concerned. देखिए, when this framework was being conceptualized, एक बड़ी casualty ये हो गई process में कि वही चीज़ें जो बुनियाद होनी चाहिए किसी भी social contract की, जिसको हम constitution कहते हैं आम जुबान में, सेहत के ऊपर, तालीम के ऊपर, गुर्बत के खात्मे के हवाले से, साफ पानी की फराहमी, and so on and so forth. ये तमाम चीज़ें are fundamental basics of any social contract, right? तो इंटरगवर्नमेंटल लेवल के ऊपर ये कोशिश हुई कि जी हम कोई ऐसा फ्रेमवर्क लाएं जो बैन अल-अक़वामी सतह पे उन मयारात को सेट करे और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए. अब जो सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया उसके अंदर वो हमारा बेचारा गोल है जिसको कहते हैं गोल 17. तो उसका जो फॉलो अप एंड रिव्यू प्रोसेस है वो डाइल्यूट हो गया. अच्छा, अब 16 के अंदर प्रॉब्लम ये हुआ कि जी 16 के अंदर जो फोकस है उसको कंटेन किया गया विद इन योर नेशनल ज्यूरिस्डिक्शन. ठीक, विच इज वाई आजकल जो डिस्कशन चल रहा है वो चल रहा है ऑन 16 प्लस, विच आई विल कम टू प्रॉब्ली इन रिस्पॉन्स टू अनदर क्वेश्चन कि जी वो क्या चीज़ है. आपके सवाल के जवाब में 2065 तक हमारे रीजन के 43 कंट्रीज में से कोई भी मुल्क इस पोजीशन में नहीं है कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर पाए. अच्छा, इस वक्त ये जो 2065 की प्रोजेक्शन है दैट इज बेस्ड ऑन 53% अवेलेबल डेटा, जिसका मतलब ये हुआ कि देयर इज अ ट्रेमेंडस स्केल ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी एज फार एज द 47% ऑफ द अननोन इज कंसर्न. ठीक है. अच्छा, अब इसमें सबसे ज्यादा जो कम डेटा है हमारे पास कि हम सूरत हाल का तयन कर सकें, तज्जिया कर सकें, वो है गोल 16 पे. ठीक, और साथ में गोल 5 जो है आपका जेंडर इक्वालिटी के हवाले से. तो एज फार एज एनालिटिकल अप्रोचेस, एक चीज शुरू में उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी नेशनल कॉम्प्लीमेंट्री इंडिकेटर्स, कि अगर आपको लगे कि इंटर एजेंसी एक्सपर्ट ग्रुप के जो सेट किए हुए इंडिकेटर्स हैं किसी भी गोल के, अगर ये इनसफिशिएंट हैं
تو اس کو بہتر بنانے کے لیے آپ نیشنل سطح پہ 3-4 انڈیکیٹرز اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. وہ تو خیر ہوئے نہیں, لیکن جو ہیں ان کے اوپر بھی ڈیٹا ہمارا نہیں ہے. اب اس میں گزارش یہ ہے, جو آپ کا سوال ہے اس کو حل ایسے کیا جا سکتا ہے کہ جو آپ کی نیشنل اسٹیٹسٹیکل کیپیسٹی ہے, بیورو آف اسٹیٹسٹک ہو گیا, 3-4 سرویز ہوتے ہیں ہمارے, وہ سارے ہو گئے, اس میں بڑی ضرورت ہے کہ جی سول سوسائٹی کی طرف سے جو ڈیٹا جنریٹ ہوتا ہے, بے شک انڈیکیٹو صحیح, اس کی بنیاد پہ تجزیہ کیا جائے, اور خاص کر جو رپورٹنگ میکینزمز ہیں اس کے اندر ایٹ لیسٹ سینس آف کرائسس تو کمیونیکیٹ کیا جائے ایٹ دا پالیسی لیول, کہ جی ہم کھڑے کتنے بڑے ڈچ کے اندر ہیں, تاکہ پھر اس کے جو نکلنے کا کوئی ثوابدید ہے وہ ہم دیکھ سکیں کہ بھائی وہ کیسے. ٹھیک, تو I'll come back to the 16+ later. Thank you. Thank you so much, sir. I'll get back to you on 16+. Okay. My next question is for Mr. Kashif Ali. Sir, since you are working with the Transparency International Pakistan, my question for you is, you already told us about what role does corruption play in hindering the achievement of SDG-16. So I want to know what strategies can be employed to combat corruption and promote transparency and accountability. Right. What I think for your question, I'll just quickly go back to what Hassan was saying earlier. اس 16 کے اوپر ایک تو بڑا مسئلہ جو ہے which Mr. Ali also pointed is the unavailability of data, right? تو ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میجر کرنا کس طرح ہے اس کو. In 2020, the Ministry of Planning and Development released a report on the data gap when it comes to SDG-16 targets. We were part of the working groups trying to figure out کہ کون سے انڈیکیٹر کو کہاں ڈالنا چاہیے in terms of the measurement. مگر اس وقت سچویشن یہ تھی, if I could correctly remember, I think around 30% جو ٹارگیٹس ہیں اس کو ہم کسی نہ کسی سروے میں ریفلیکٹ کرتا تھا ہمارے. مگر آج تھوڑی سچویشن بہتر ہے 2023 میں. 16 کے تقریباً میرا خیال ہے 40-45% ایسے ٹارگیٹس ہیں جو ہم نے کچھ انڈیکیٹرز پاکستان ڈیموگرافک اینڈ ہیلتھ سروے اس میں ڈال دیے ہیں, کچھ انڈیکیٹرز ہمارے نیشنل لیول سرویز ہوتے ہیں اس میں ڈال دیے ہیں, بٹ اسٹل 53% از اے ہیوج نمبر ان ٹرمس آف دی ڈیٹا گیپ. مگر سوال یہ ہے کہ ہم یہاں پہ آج بیٹھے ہوئے ہیں ایز اے سول سوسائٹی, ایز ینگ پیپل, ایز پیپل فرام دی ایکیڈیمیا, واٹ رول کین وی پلے ان دی امپلیمنٹیشن؟ اینڈ دیئر آئی تھنک دیٹس اے very important that all of us have to think about, because SDGs is not only the domain of the governments. The governments have to make policies. What we have to use, what we have to do as users of these policies is to make sure that the laws that are being enacted are implemented well, which means to work on the demand side of the laws. اگر آپ 16 کو دیکھیں, 16 has a lot to do with the macro level policies, right? Institution building, corruption, rule of law, etc. بہت اچھے قوانین پاکستان میں اس وقت بن چکے ہیں on most of these issues. The problem lies in terms of the awareness. So if I give you a quick example of 16.10. Now 16.10 requires the access to information. The one indicator is how many access of information laws do you have in a country. We have excellent access to information laws at both provincial level and the federal level. All the 4 provinces have. Balochistan was the last province which the assembly enacted the right to information. Balochistan amended 2020 law in 2002. So the laws are there. Where is the problem? Problem یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن کس طرح استعمال کرنا ہے. As young people, as researchers, as civil society, we have to make sure کہ اگر ہم نے کرپشن کو ایڈریس کرنا ہے یا ٹرانسپیرنسی کو پروموٹ کرنا ہے, we should use more and more of these laws. And the right to information is a very important social accountability tool that you can use to make your daily lives better. اگر آپ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں دیکھیں تو انڈیا میں ایک رکشے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ RTA کیا ہے, اور اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ نظر آتا ہے آپ RTA اپلیکیشن فائل کریں. رائٹ ٹو انفارمیشن اپلیکیشن آپ کو نہیں ملتی. یہاں پہ چاروں پروونسز میں انفارمیشن کمیشنز بنی ہوئی ہیں. وہ کمیشنز کے پاس جوڈیشل پاورز ہیں. وی ہیو اے لیگل ایڈوائس سینٹر. ریگولرلی وی گیٹ such complaints. We send it to the commissions and the commissions are doing very good job in terms of resolution of some of these. So right, RTI is one important tool that all of us can use to make our governance systems better. The second is, اگر آپ 16 کو دیکھیں, اگر 16 کا ایک میرا خیال ہے 16.4 ہے جس کے ٹارگیٹ ہیں پبلک پارٹیسپیشن اینڈ ڈیسیشن میکنگ. پبلک پارٹیسپیشن ڈیسیشن میکنگ میں کس طرح آتی ہے؟ One important way is the electoral process.
We have elections coming up. The ECB has announced in January 2024. Let's hope they take place. But whenever they take place, I think the biggest tool that we have for participation and decision making is the voting. If you look at the data, number of the eligible voters that do not show up on the day of the elections. This is something that we can do in terms of the implementation. इसी तरह अगर आप 16.5 को देखें, rule of law, which again talks of public sector corruption, उसमें हमारे पास social accountability के tools मौजूद हैं. And these tools have been institutionalized so that the citizens, अगर आप climate को देखें, climate इस वक्त बड़ा हमारा मसला है. चारों प्रोविंसेस की अगर आप क्लाइमेट पॉलिसीज़ को देखें, उसमें यकीनी बनाया गया है कि यंग लोगों की शमूलियत को आपने यकीनी बनाना है, कम्युनिटीज़ की कंसल्टेशन करनी है. How many of us know when the policies are floated? How many of us participate in this process and use our rights that are given by us, which was rightly pointed out by the Constitution, the social contract? So I think these are some of the tools that are available to us, and they can directly lead into the implementation of SDGs at both national level, sub-national level, and also the local level, जहाँ पे हमारी communities exist करती हैं. Thank you so much, sir. Ma'am Saima, my question for you is that since you are working at the Consulate of Foreign Relations and you must be knowing about what international countries are doing about SDG-16. So what do you think that, what are the differences between what are the international practices, and you must have also seen what are the local practices here in Pakistan. So can you, kind of differentiate between it and maybe do a comparative analysis and tell us what we can do more here in Pakistan as compared to international countries? Thank you. Very good question. So, on that behalf, the question is that as I am doing associated to foreign countries and locally, what is the difference and what are the practices that are adopted in foreign countries and what should be adopted in Pakistan? So, I have made some kind of points. Actually, I was associated to Ministry of Planning, Development and Special Initiative as champion of reforms, as it's the advisor to policies. We go to the federal ministry and the policies related to the development. We present our issues, policies and suggestion on that. So, interlinking with the foreign countries, the government of Pakistan has initiated a 5E framework. This kind of discussion we have heard a lot by the minister, federal minister, that we have launched a 5E network. But have you understand that what is 5E network and what can we do in this 5E network to make us more prominent in the local countries and international countries? Now the 5E network is, number one is export market. This export market, the government along with the international associations and international market, they have set some initiatives, that is economy competitive, productive enhancement, product and market diversification, brand development, trade development, global value chain. Then comes e-Pakistan. E-Pakistan talks a lot about IT industry. We are excellent in IT industry. We all know that. Our talent, our young talent is so good that in foreign countries, people call them, come and perform their projects, or they offer us. So we have the opportunity in terms of sustainable development goals to have e-Pakistan framework, and in that we can do a lot in IT. Freelancing network. There's a lot about freelancing networks. We can do a lot in that. If we say there is nothing, then really there is nothing.
But if we say, yes, there is something and I will find my own way, then definitely you can find your own way. It's all about your perception. If you think that this is worst or my country has something lackness, then yes, your country, you will find many lack points. But if you see some people that we are from Pakistan, but we connect to the whole entire world. I am from the middle class family. I have done MS in HR and now I am doing PhD. The reason to connect with the foreign world is that I am too much interlinked with the foreign ministry's activities and the ministry activities, and I am highlighting my works in terms of projects. So, students, you are very talented. In terms of sustainable development goals, there are many projects like climate, water sanitation. We can do a lot. From our university, we can do a lot and interlink with the foreign market. At least, suppose we are not accident, suppose, but at least we can do a small mini project related to climate change and make ourselves some kind of contribution in that. At least I think that we Pakistani hold some kind of value, don't we? We do now. That's it. Thank you. Thank you so much, ma'am. Ma'am Sabina Basi, you are also based in Qatar as of now, I guess, in UAE? Okay. So you must have seen what UAE is doing regarding SDG 16. And also please connect it with SDG 4 quality education. And how is SDG 16 impacting SDG 4? And what can be done in compared to the international market in Pakistan? Right. I think Middle East is again, if we specifically talk about UAE, definitely if we look at this specific goal, peace and sustainability and strong institutions, I think. Which is why it's a very famous market, especially for people from South Asia, because they offer you that, right? And like I said before as well, unless and until you have strong institutes, you have a place where an individual can flourish based on merit, right? That's where these are the markets that attract talent, and which is why you see a lot of innovation in these markets as well. And Middle East, starting from UAE now, for example, Qatar and now Saudi Arabia as well, they're literally transforming themselves and they're attracting talent because, and even in Saudi Arabia, I think they have also transformed a lot of their own internal policies and opening up their markets so that they can attract. Because I think everybody has realized that if you need innovation, you need talented people, and for that you need strong institutions. And your second question, linking education to peace, because I think we were talking about why it's important, but because I have primarily worked in the field, I think for me it's very important the question that how to do it, right? We always discuss about the problems and the challenges that we're facing, but how do we resolve them? And I think a lot of everyone has shared some good pointers like be aware of right to information. And I think that's a starting point, awareness, and that's what we do in education. We make sure that the constitution and the human rights are embedded within your curriculum and not just in the traditional way of rote learning, because there's a famous example that I always share that यहाँ पे किसी से पूछेंगे सबको पता होगा सफाई निर्सीमान क्या है, but Pakistan is one of the dirtiest nations in the world. So what's wrong? ऐसा नहीं कि हमें नहीं पता, aware हम हैं, लेकिन हम implement नहीं करते. And all of us, like, I'm not blaming anybody else, all of us are part of it. So ये कहाँ gap कहाँ आता है? I think that's my main research, that even if you teach, you don't implement.
And I think that's where institutions come in, and that's why places like Middle East are successful, because of accountability and very high strict level of accountability, which is why hum agar wahan jate hain to hum bhi seedhe ho jate hain. So yeah, I think at the end of the day, it's really important that you link all the other SDG goals with this one, because jab tak wo nahi hoga, baki sab again awareness ke baad implementation wahi major gap hai. इंटेंशनल होमिसाइड के अंदर इंक्रीज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर इंक्रीज, फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के अंदर इंक्रीज, कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर इंक्रीज. अभी यूनाइटेड नेशंस के क़याम से लेकर इस वक्त सबसे ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है इन पिछले सब सालों में. 40s से लेकर अभी अराउंड 70 ऑड ईयर्स 2 बिलियन लोग इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में हैं पूरी दुनिया में, राइट. उसके बाद अथॉरिटेरियन गवर्नेंस का राइज, ठीक है, और ये तमाम मामलात, वो सारे तो हमारे इश्यूज हैं. अच्छा, 16 प्लस ये है कि और इनको दुरुस्त करने के लिए ऑफ कोर्स यू हैव टू डेमोक्रेटाइज नॉट जस्ट स्टेट इंस्टीट्यूशंस बट आल्सो सोशल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें आपके जो ब्रॉडर कम्युनिटी और मुआशरा होता है उसके एटीट्यूडनल ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. यू नो, वहाँ से आपके बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिजॉल्व होती हैं, राइट. ऑल द वे फ्रॉम करप्शन टू किसी की जान ले लेना एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट. अच्छा, 16 प्लस का डिस्कशन पिछले 2-3 सालों से इवॉल्व हुआ है. अभी जुलाई में भी जो कॉन्वर्सेशंस हुई, एक तो सेकंड करूंगा, जो बात ये है कि जी 17 का रिव्यू होता है हर साल, ठीक. मोस्ट कंटेस्टेड है वो, पैसे किसी को नहीं देने उसमें, रिसोर्सेज की बात है और बाकी चीज़ें. हम ये पुश कर रहे हैं एज द इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी, जिसमें एशिया पैसिफिक इज टेकिंग द लीड. हमारे साथ लैटिन अमेरिका का एक ब्लॉक है, एक यूरोप का है और एक अफ्रीकन कंट्रीज का है, कि जी आप 16 को भी हर साल रिव्यू करें. उसकी वजह उसकी इंटरसेक्शनल टाइज है टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एंटायर फ्रेमवर्क एज वेल एज इट्स क्रिटिकलिटी टू द डिलीवरी ऑन सस्टेनेबिलिटी. अच्छा, अब 16 प्लस है ये कि जी उसमें आपने 16 के अंदर सारा जो फोकस किया है ना टारगेट्स का, वो मुल्क के अंदर किया. कई ऐसे इश्यूज हैं और बड़े इश्यूज हैं जिनकी वजह से आपके यहाँ घर में छोटे इश्यूज हो जाते हैं विद इन नेशनल ज्यूरिस्डिक्शन, जो किसी भी मुल्क की ज्यूरिस्डिक्शनल कैपेसिटी से बाहर लाए करते हैं. मिसाल के तौर पे 2 क्रिटिकल एग्जांपल्स. इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज. हमारे यहाँ से टैक्स एवेजन करती हैं मल्टीनेशनल्स, ठीक, एसेट स्टेल्थ करती हैं, प्रॉफिट शिफ्टिंग करती हैं और उसकी बुनियाद पे पैसे निकाल के ले जाती हैं. अब मैं आपको एक स्टेटिस्टिक दे दूंगा, बड़ा मजे का खेज है. अभी जाके हमने $200 बिलियन के करीब हम पहुंचे हैं पिछले साल, जो डेवलपमेंट फाइनेंसिंग अमीर मुल्कों से गरीबों को दी गई, ठीक, पिछले साल हुआ है ऐसा. लेकिन 2014 का मैं एक स्टेटिस्टिक आपको दे रहा हूँ क्योंकि हम यूएन को यही दरखास्तें कर रहे हैं और अब टीआई के साथ भी हमारा अच्छा काम होगा मेरे ख्याल से. वी कैन पुश दिस कि जी इस इंडिकेटर को ट्रैक करने की ज़रूरत है. ये फॉर्मली ट्रैक अभी तक नहीं होता. हमारे सिविल सोसाइटी के कुछ दोस्तों ने एक रिसर्च की जिसमें हमने ये देखा कि जी अमीर दुनिया की तरफ से, ग्लोबल नॉर्थ की तरफ से ग्लोबल साउथ को, गरीब मुल्कों को 2014 में $134 बिलियन दिए गए उनकी तरक्की की सिचुएशन को बेहतर करने के लिए. उसी साल में उसी अमीर दुनिया की मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस टैक्स एवेजन, एसेट स्टेल्थ और प्रॉफिट शिफ्टिंग के जरिए गरीब मुल्कों से $2.1 ट्रिलियन निकाल के ले गई. अब बुनियादी सवाल यह बनता है कि जी हु इज डेवलपिंग हु हियर, ठीक है. अच्छा, तो एक तो इस तरह के इश्यूज हैं जिनको रिजॉल्व करने की जरूरत है एट द मल्टीलैटरल लेवल. यू कांट डू इट इन पाकिस्तान. बहुत सारे मुल्क हैं जिनकी जुरिस्डिक्शनल कैपेसिटी, उनकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग वो होगी ही नहीं कि रिजॉल्व हो सके, तो डेवलपमेंट का मसला ऐसे ही रहेगा. एक तो ये चीज जिस वजह से 16 प्लस की जरूरत पड़ रही है. दूसरा बड़ा इशू जी आपका है, मिसाल के तौर पे रेकोटिक का केस गालिबन आप सबको याद होगा. $5 बिलियन का हमें फाइन लगा था. उसमें हुआ ये कि एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हमारी नेशन स्टेट को जाके एक कॉन्ट्रोवर्शियल इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के मैकेनिज्म में सू कर देती है, और वो कोर्ट जिसमें वही वकील जो एक केस में उसी कंपनी का लॉयर है, दूसरे में उसका फैसला करने के लिए जज बना हुआ है, उसने फैसला ये दिया कि पाकिस्तान को $5 बिलियन का फाइन लगेगा. तो जो इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट इसको कहते हैं, यानी ये सारा कुछ होता है जो WTO के बहुत ही कॉम्प्रोमाइज्ड हेजमोनिक किस्म के ट्रेड रूल्स हैं उनकी वजह से. तो इस तरह के जो ISDS टाइप के मसले हैं उनको भी 16 प्लस के अंदर जो है वो रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है कि जी इसको होना चाहिए.
پھر آخری چیز اس میں ملٹرزم ان کانفلکٹ. پوری دنیا میں یہ کووڈ ہو گیا, آپ کو یار اور کیا ایسی چیز چاہیے کہ ملٹی لیٹرل لیول پہ یہ جو گلوبل لیڈرز ہیں ان کو کوئی ہوش آ جائے کہ ہمیں دنیا کے لیے کچھ کرنا ہے. ٹرپل پلانٹری کرائسس آپ کا چل رہا ہے کلائمیٹ کے حوالے سے, کووڈ دنیا کے اندر ہو گیا, اس کے علاوہ آپ کے 15 مسائل ہیں, غربت ہے, سارا کچھ ہے. آپ ایس ڈی جیز کو اچیو کرنے کے حساب سے اس وقت کھڑے ہیں صرف 15% پہ. یہ انٹونیو گٹیریس صاحب نے پرسوں کہا ہے. ٹھیک ہے جی. اس سب کے باوجود امیر ملکوں کی طرف سے جو پوری ڈیولپمنٹ اسسٹنس ہم موبلائز کر سکے وہ بڑی مشکل سے پچھلے سال ہوئی $200 بلین. اسی سال کے اندر صرف 5 جو ٹاپ آپ کے ملٹری اسپینڈرز ہیں, امریکہ, رشیا, سعودی عربیہ, انڈیا اور آپ کا چائنا, انہوں نے کل ملا کے $2 ٹریلین کا مارک جو ہے اس کو کراس کر لیا پچھلے سال. جب آپ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے $200 بلین بھی نہیں موبلائز کر سکے, وہاں آپ کے صرف 5 ملک $2 ٹریلین جو ہے وہ اسپینڈ کر رہے ہیں ملٹری کے حوالے سے. اب ان سے سوال کہاں ہوگا اور کون کرے گا؟ اس وجہ سے 16+ کی بہت اشد ضرورت ہے. اب ہم کوشش کر رہے ہیں, 16 پہ تو ہے ہی مسئلہ, لیکن ملٹی لیٹرل لیول پہ کچھ چیزیں جو ہے وہ ہم بہتر کرا لیں. اور سول سوسائٹی کا بڑا رول ہے, نوجوانوں کا بڑا رول ہے, اکیڈیمیا کا بڑا رول ہے اس میں. جو آپ نے بھی کہا کہ جی جب تک ہول آف اے سوسائٹی اپروچ نہیں آئے گی تو آپ نہ ڈیموکریٹائز ریاست کے اداروں کو کر سکتے ہیں, نہ معاشرے کے اداروں کو کر سکتے ہیں. اور جب تک ایسا نہیں ہوگا وی کانٹ اچیو آئیدر دس فریم ورک یا پھر جو 2030 میں جس کی بات شروع ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, سمٹ آف دا فیوچر ہو رہی ہے نیکسٹ سال, تو اگلا جو ہمیں دیں گے وہ 17-18 کا, اس کی بات شروع ہو گئی ہے, تو وہ نہیں ہو سکے گا. تو اٹ ہیز ٹو بی فکسڈ ہیئر بفور وی کین اسٹارٹ فکسنگ دی apparatus around us. Thank you. Thank you so much, sir. I'm sure you all must have found it very insightful and knowledgeable. I would like to take a few questions from audience if you guys have any questions. Anyone? Okay. I'll start the ball rolling. Greenwich here. Kashif sir, RTI, rights to information. RTI से डर नहीं लगता साहब, काले डाले से लगते हैं. Now that was the lighter side, but on a very serious note, that brings us to the center point. That is justice. So, Kala or Pila or Pila, it starts with that and ends with that. And that brings us to this plus, 16 plus. See? So, my question to all of you is that yes, these goals are there, have been set, start with it, कुछ और नंबर था, ऐसा बढ़ते बढ़ते 17 क्या 1700 भी हो जाए. But हम भी जाहिर है क्योंकि all of us are part and parcel of this whole gimmick. क्या actually doable, really doable indicators हैं जो कि हम सब मिलकर एक को उठा लें ताकि सिरा स्टार्ट हो जाए, काम स्टार्ट हो जाए. नहीं हो पा रहा. जैसे अली ने कहा, yes, every year we say कि जी लेटर नहीं रहा सर, लेटर नहीं रहा, क्या करें भाई. मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन को ही सही कर लें. और इसमें मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, I belong to a fraternity of quality assurance in education. और बड़ा जैसे आप सबने बात किया थी, तो जब स्टार्ट किया ना पाकिस्तान में QA का प्रोसेस, किसी को क्वालिटी के सही वो भी हर एक अपना डायरेक्ट भी लाइसेंस ऑफ तो क्वालिटी भी हर एक का अपना होता, बट एटलीस्ट स्टार्ट कर दिया विद बेसिक्स की. और आहिस्ता आहिस्ता सारे इंडिकेटर्स सब दे दिए मगर वी स्टार्टेड विद फर्स्ट कि जी ये 2 करने सारे इंस्टीट्यूट को कहा कुछ ना करो, बस ये 2 इम्प्लीमेंट करो फुल उसके साथ. और आहिस्ता 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 स्क्रूज टाइट करते चले. 15 years down the lane, now majority of the higher education institutes are fully aware of what quality assurance in education, at least awareness. तो मैम एडवोकेसी की जब हम बात कर रहे हैं तो अवेयरनेस भी आ गई, इम्प्लीमेंटेशन भी स्टार्ट हो गई. अगर आप मुझे मेरा क्वेश्चन
मैडम आपने मेरा ख्याल है कि काफ़ी मुश्किल है बिकॉज आई थिंक वन थिंग दैट वाज कॉमन अक्रॉस द पैनल was I think the challenges in 16 so we all understand who are working on this कि मगर मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है और मेरा जो एक्सपीरियंस है इस पे काम करने का 16 गोल की अगर आप मेजॉरिटी चीज़ें देखें तो मैक्रो लेवल की चीज़ें हैं वो पॉलिसी लेवल की चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं जो हुकूमत ने करनी है हमारा एज ए सिविल सोसाइटी और एज यूथ विच इज़ जो हम कहते हैं मेजॉरिटी ऑफ आवर कंट्री पॉपुलेशन मेरे ख्याल है मगर उसमें 2-3 ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनका हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से बड़ा ताल्लुक़ है और अगर हम उसको स्टार्ट करना शुरू कर दें तो SDG-16 में हम बड़ा अच्छा एक रोल प्ले कर सकते हैं एंड आई वुड अगेन कम बैक टू RTI 16.10 बिकॉज 16.10 अब दुनिया भर में यूनेस्को अगेन इज़ अ लीड ऑर्गेनाइजेशन ऑन इट दुनिया भर में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है नॉट ओनली आई थिंक एज ए स्टैंड अलोन इंडिकेटर बट ऑल्सो एज एन इंडिकेटर विच फीड्स इनटू 16.4, 5 एंड 6 और अगर इसमें अगर देखें तो द रीज़न आई वाज सेइंग बिकॉज वी हैव come a long way across we were the first country in South Asia to have freedom of information laws those laws were not ideal but still we were the first country to adopt them and back in 1998 and then 2002 but right now the laws that we have as law they are very good laws problem हमारे यहाँ ये आती है कि implementation नहीं होती implementation किसने करनी है अगर हम as citizens बैठ के हुकूमत से ये expect करेंगे कि ये चीज़ों की implementation होती कोई नहीं चाहता ना ब्यूरोक्रेट चाहता है ना जस्टिस सिस्टम जुडिशरी चाहती है एक RTI एप्लीकेंट गया हमारे पास कंप्लेन आई लाहौर से one of the citizens went into the Lahore High Court. He filed an RTI application asking the Chief Justice to disclose his salary, perks and privileges and everything. The registrar of the High Court returned the RTI application saying that the judiciary is not a public body. Now, we are not talking about any other, public institution. We are talking about the judiciary that has a role to uphold the Article 19A, which is part of the 18th Amendment to our Constitution. So the RTI application was returned back saying that the judiciary is not a public body. The applicant went into the Pakistan Information Commission. The Information Commission gave a verdict that no, according to this law, the judiciary is a public body. The information should be provided. The case is still pending. The information is not being given. Now, what we can do कि जब ज़्यादा से ज़्यादा laws जब बन जाते हैं उनकी डिमांड साइड के ऊपर हमने काम करने की ज़रूरत है एज सिटीजन्स एज यंग पीपल कि हम उन लॉज को इस्तेमाल तो करें ना ताकि गवर्नेंस का सिस्टम बेहतर हो जब गवर्नेंस के सिस्टम को ये पता होगा कि सिटीजन्स की इन्वॉल्वमेंट है और सिटीजन्स बजटरी एलोकेशंस के ऊपर उनकी नज़र है और वो सवाल पूछ सकते हैं देन थिंग्स के ओपननेस ऑलवेज लीड्स टू ट्रांसपेरेंसी ये हम एडवोकेट करते हैं इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे भी तो ऐसे काफ़ी 16 के अंदर भी अगर आप एक चीज़ मुझे कहें कि पिक करें तो मैं 16.10 को पिक करूँगा जो RTI के ऊपर है लॉज हैं इसी तरह 16 में FATF के बाद हमारी बहुत अच्छी कंप्लायंस है अगेन लॉज बन गए हैं FATF का एक हमारे ऊपर स्टिक है और तो हमने लॉज तो बना दिए हैं who is going to implement this laws the laws get implemented when there is a more and more usage of these laws so I would pick 16.10 I don't know what about the other panelists would think Anybody else wants to contribute? Yeah, sure. बिल्कुल ज़रूरी है जी शैला ज़िया was one of the most formidable lawyers this country ever produced तो उनसे जो 2-4 चीज़ें सीखी ट्रेनिंग में वो एक मामला ये था कि जी कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन तब तक नहीं हो पाएगी जब तक सोशल एंडोर्समेंट नहीं होगी उन अक़दार की जो उन कवानीन के अंदर इंश्राइन किए गए ठीक दैट्स द बेसिक्स सर FATF के अलावा वो याद होगा आपको GSP प्लस जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस यूरोप ने हमें दिया था तो उसमें $1 बिलियन फ़ायदा होता था हमें ट्रेड में कोटा फ्री एक्सेस की बुनियाद पे और उन्होंने जवाब में कहा था कि जी 27 ट्रीटीज़ जो हैं अक़वाम मुत्तहिदा की उसकी इम्प्लीमेंटेशन करें तो आई वाज पार्ट ऑफ द रिव्यू प्रोसेस सिविल सोसाइटी की तरफ से तो हमारे यहाँ से जो रिपोर्ट जनरेट हुई उसमें पता लगा कि 273 कवानीन हैं
in compliance with the 27 treaties, meaning on average with one treaty we had about 10 laws. आप मुझे बता दीजिए कि उनमें से किसी एक की इम्प्लीमेंटेशन इन इट्स ट्रूएस्ट स्पिरिट अगर हमारे मुआशरे के अंदर कहीं रिफ्लेक्ट होती हो, ठीक, जहाँ पे फिर ये पैरेलल रिपोर्टिंग और बाकी चीज़ों का मामला आ जाता है. अच्छा, दूसरी गुजारिश इसमें यह है कि जी देखें, हमारे यहाँ एक बड़ा मसला हो गया है अदम बर्दाश्त का. ठीक, उसमें प्रॉब्लम ये है मेरी नज़र में, जो डिसेंट है किसी और का, आपकी राय से इख्तलाफ है, उसको अकोमोडेट करना इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ सोशल जस्टिस. ठीक, तो हमें थोड़ा सा जिस चीज़ की अब ज़रूरत है बहैसियत मुआशरा, वो ये है कि हमें एक तो इंट्रोस्पेक्शन कि हम अपना तज्जिया करें कि हम किधर खड़े हैं एज अ पर्सन. ठीक, रिक्शे वाले को पता होता है कि 70 रुपये जो है वो एक जगह का किराया है, लेकिन वो मुझे बताता है कि मैंने 100 रुपये लेने हैं, और मुझे भी पता है कि 70 रुपये है, लेकिन मैं उसको कहता हूँ कि मैं 50 दूंगा. दोनों ने जाना 70 में है. ठीक, तो ये जो थोड़ा सा रविश है ना, इसको ज़रा बदलने की ज़रूरत है, और वो आपके अंदर से शुरू होती है. राइट. अच्छा, फिर आखिरी इसमें चीज़ ये है कि जी बड़ी बात होते हैं हमारे जो सिविल सोसाइटी वाले बेचारे जज्बाती लोग हैं, मेरे जितने दोस्त हैं, वो अक्सर ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को रेफर करते हैं ना. तो उसमें जो 29वां राइट है, अगर उस पर गौर करें तो वो है राइट टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ठीक है, जैसे आपके सोशल कॉन्ट्रैक्ट में होता है ना कि कुछ रियासत के हुकूक हैं, कुछ आपके हैं, तो जो रियासत के हुकूक होते हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं. अच्छा, अब हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों में जमहूरी अक़दार बहैसियत पर्सन इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है, इंश्राइन भी नहीं है, कहीं पे आपको रिफ्लेक्ट भी नहीं होते नजर आते. तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगर हम खुद दुरुस्तगी का अमल शुरू कर दें, जब मैं अपने आप को चेक करूंगा ना, तो मैं शायद फिर साथ में इनको भी चेक करूंगा इन टर्म्स ऑफ हर कॉन्डक्ट. और यही फिर जब आपके समाजी इदारों के अंदर आएगा, तो फिर आपके रियासती इदारों के अंदर भी रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा. इस वक्त मुसीबत यही होती है कि मैं इनसे कोई सवाल इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अपने 4 कट्टे खुल जाएंगे उसमें. ठीक, तो इट्स एटीट्यूडनल ट्रांसफॉर्मेशन दैट वी नीड. राइट. तो उसके बाद फिर आप देखें, बड़े मुल्क हैं, सॉरी जस्ट एक एग्जांपल, आज जिसको दुनिया में सबसे ज्यादा, अभी भी आप देखें ये जो नौजवानों का बज़वर्डेड कहानी चल रही है ना कि इनको डालें, ये करें, इनको बिठाएं डिस्कशंस में, सारा कुछ है, इसकी मोस्ट प्रैक्टिकल फॉर्म इस HLPF में नजर आई किन की तरफ से? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की तरफ से, चारों की तरफ से, अलावा डेनमार्क के, फिनीज, आपका नॉर्वेजियन, आपका स्वीडिश. नौजवान बच्चा बिठाया हुआ था, उसको मिशन का हिस्सा ऑलरेडी बना चुके हैं, और वो इंटरवेंशंस कर रहे हैं एट द इंटर गवर्नमेंटल लेवल. 20-22 साल का मुश्किल से बच्चा है. राइट. तो ये वो लोग हैं, अगर किसी ने वो देखा है ना लॉथब्रुक वाला, कौन सा है उसको क्या कहते हैं, बड़ी मशहूर सीरीज अभी चली थी कि जी ये दुनिया की गैर महज़ब तरीन जो है वो कौम थी किसी दौर में. आज पूरी दुनिया, आपका अमेरिका, आपका UK, आपका यूरोपियन यूनियन जिस मॉडल को फॉलो करने की बात करता है, और बाय द वे जिसको हम ये फलाही रियासत और ये वो सारी कहानियां करते हैं ना, ये फलाही रियासत इस वक्त प्रैक्टिकली अगर कोई पॉलिटिकल मॉडल है गवर्नेंस का जहां ऑपरेशनलाइज्ड है, तो दैट्स स्कैंडिनेविया. ठीक है, तो वो अगर ये सफर तय कर सकते हैं कि इतने पीछे होने के ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टैंडर्ड से आज दुनिया की बेहतरीन सिविलाइजेशन है, मेरे ख्याल से हम काफी करीब हैं. वी जस्ट नीड टू फिक्स आवरसेल्व्स. थैंक यू. I just want to quickly add that यहाँ पे आई एम श्योर काफ़ी लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे, और वहाँ पे एक बेसिक प्रिंसिपल होता है इंसेंटिव का. जब आप किसी को राइट इंसेंटिव नहीं देंगे तो वो एक्शन नहीं आएगा. फॉर एग्जांपल, एक कोई साहब एग्जांपल दे रहे थे कि लाहौर के एक इलाकों में उन्हें बड़ा काम किया, बड़ी लोगों की खिदमत की, लेकिन जब इलेक्शन आए थे तो उसने जो जिसके पास पावर थी ना उसी को वोट दिया था, क्योंकि उसको पता था मेरा काम इसी ने करके देना है. एट द एंड ऑफ द डे उसके कनेक्शंस हैं, उसका नेटवर्क है. सो द आइडिया इज़ दैट जब ग्रास रूट लेवल पे आपने इंसेंटिवाइज गलत सिस्टम्स को किया हुआ है, तो कहते हैं ना कॉन्शियसनेस जो सोसाइटी में होती है लेकिन रूल ऑफ लॉ नहीं होता, तो वो बड़ा आप अगर बहुत अच्छे भी होंगे तो आप उसको लेट गो कर देंगे. एंड वी हैव सीन लॉट ऑफ एग्जांपल्स जो कि सही भी करना चाह रहे होते हैं वो नहीं करते हैं, बिकॉज ऊपर जब आपका नेटवर्क ही चल रहा होता है देन यू रिजॉर्ट टू दैट. सो फिक्सिंग दैट is also very very important because society works on incentive. और अगर जहाँ इंसेंटिव होगा वहीं आपकी सोसाइटी में होगी. एक और चीज़ जो अली साहब भी बात कर रहे थे, दैट मेकिंग लॉज विद लोकल कम्युनिटीज़, राइट. जैसे अगर इस्लामाबाद में बैठ के कोई लॉज बन रहे हैं और राजनपुर के गांव में वो रियलिटी है ही नहीं, बहुत डिफरेंट रियलिटी है, और हम
کوشش کرتے ہیں کہ ہم امپوز کریں وہ سیم لا, سیم کریکولم, سیم ایسنسی اس جگہ پہ جہاں پہ ان کی ریالٹی بہت ڈفرینٹ ہے. وچ از وائی آئی سیریسلی بلیو کہ جو لوکل الیکشنز ہیں وہ بہت بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں کہ آپ کی جو لوکل کمیونٹی ہے وہی ڈیسائڈ کرے, کیونکہ ان کو زیادہ پتہ ہے اپنے مسئلوں کا. اینڈ امپاورنگ پیپل اینڈ ٹرسٹنگ دیم اینڈ ناٹ دی جو مسایا کمپلیکس بہت زیادہ ہے پاکستان میں. آئی تھنک لیٹنگ گو آف دیٹ اینڈ ایک بندے کے پیچھے نہیں بھاگنا, انسٹیٹیوشنس کے پیچھے, رسپیکٹنگ دا انسٹیٹیوشن ناٹ جسٹ ون پرسن. Thank you so much. I won't be taking any more questions since we are short of time here. And let's just wind it up. So, in concluding this panel discussion, it is imperative to underscore the pivotal role that peace, justice, and strong institutions play in the country's journey towards sustainable development. While acknowledging the commendable progress made, we must also candidly confront the challenges such as corruption and security concerns that persist. Collaboration among government, civil society, academia, and the private sector is not just advantageous but imperative. The youth, as the drivers of change, must be empowered and engaged, and accountability and transparency in governance should be non-negotiable. I hope you like this panel discussion. Please give a huge round of applause for our panelists. پرابلمز ہیں, جو بھی جو ایشوز وہ فیس کر رہے ہیں ایکیڈیمک کے حساب سے بھی, اور نارملی جو پرسنل ایشوز وغیرہ بھی ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس کاؤنسلرز وغیرہ سب کچھ اویلیبل ہیں. سو اس حوالے سے تو آئی ایم ویری پراؤڈ بینگ اے زیبسٹین. دیز آر دی سوسائٹیز جو کہ زیب اسٹوڈنٹ کاؤنسل کے انڈر آتی ہیں, اور کچھ کلبز بھی ہیں جو کہ زیب اسٹوڈنٹ کاؤنسل کے انڈر آتے ہیں, بیکاز زیب اسٹوڈنٹ کاؤنسل از این امبریلا. ہمارے پاس ڈفرینٹ انٹرسٹ کے لوگ آتے ہیں بیکاز ڈائیورسٹی ہے زیبس میں, اور ڈفرینٹ انٹرسٹ کے لوگ بھی ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جن کی ڈبیٹنگ کے اندر جو ہے جن کا شوق ہے, کسی کا لاء میں شوق ہے. ماڈل یونائٹڈ نیشنز تو آج کل بہت ہی زیادہ ہٹ چل رہا ہے لوگوں کے درمیان. اور پھر جو ہمارا کلچرل سوسائٹی ہے, ہماری اسپورٹس سوسائٹی ہے, بیکاز اگر کہا جاتا ہے کہ کسی بھی یونیورسٹی یا کسی بھی آرگنائزیشن کے لوگ کتنے فٹ ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو وہ آرگنائزیشن ہے وہ کتنی زیادہ فٹ ہے. تو اسپورٹس سوسائٹی جو ہے ہماری بڑے اچھے کام کریں اور انتھک محنت کریں. اس وقت بھی ہمارے یونیورسٹی کے اندر جو ہے ویلکم ویک جاری ہے. اینڈ سوری میری وائس بھی آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا تھوڑی شیکی سی ہو رہی ہے, بیکاز آئی ہیو بین ہوسٹنگ آل دی پروگرامز دیر ایز ویل. سو یہ ساری سوسائٹیز جو ہیں یہ ہمارے زیب اسٹوڈنٹ کاؤنسل کے امبریلا کے انڈر کام کر رہی ہیں, اور اس کے اندر ہمارے پاس ڈفرینٹ کلبز بھی ہیں تاکہ ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس جو ہیں اپنے جو آئیڈیاز ہیں اور جو اپنی ایکسپرٹیز ہیں وہ لا سکیں, اور زیبس کا نام جو ہے آگے لے کے جا سکیں. جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کلبز کے بارے میں بھی, کلبز آر بیسکلی انڈیپینڈنٹ لیکن وہ آتے زیب اسٹوڈنٹ کاؤنسل کے انڈر ہی ہیں. اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چیس کلب الگ سے ہے, لوگ میتھمیٹکس کے حوالے سے فائنانس کلب بھی ہمارا بنا ہوا ہے. اس طریقے سے ڈفرینٹ کلبز ہیں ہمارے جو کہ زیب اسٹوڈنٹ کاؤنسل کے اندر آ رہے ہیں. اور جو اسپورٹ ایکٹیویٹیز جیسے طریقے سے میں نے بتایا تھا کہ ایک یونیورسٹی کتنی فٹ ہے, کتنے انرجائزڈ لوگ ہیں, وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں اسپورٹس ایکٹیویٹیز کتنی ہیں. تو ہماری اسپورٹس ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بھی ہو رہی تھی, جس کے اندر ہماری پوری سلیکشن ہے, جس کے اندر کرکٹ, فٹ بال, والی بال, تھرو بال, فار ایوری بڈی, گرلز اور بوائز, ہر کسی کے لیے جو ہے ایکول اپارچونیٹیز جو ہیں اویلیبل ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہمارے کچھ میجر ایونٹس, جس طرح ابھی ہمارا ویلکم ویک چل رہا ہے, اس طرح ہمارے کچھ میجر ایونٹس ہیں جو کہ ہر سال ہوتے ہیں, اور اس سال بھی انشاءاللہ ہوں گے. اور ابھی پاس میں جو ابھی ہمارا ویک گیا ہے اس کے اندر ہمارا سوسائٹی فیئر بھی ہوا, اور کامیڈی نائٹ, اینڈ آج جو ہے ہماری ای ڈی ایم نائٹ ہے. ابھی یہاں سے ہم نے وہیں پر ہی جانا ہے ڈائریکٹ. سو قوالی نائٹ بھی ہوگی, مشاعرہ بھی ہوگا, کانسرٹ بھی ہوگا. ایک اس میں بیچ میں ایک ایجوکیشنل ایونٹ ہونا بہت زیادہ لازمی ہے, بیکاز صرف سوشل ایونٹس کے اوپر لے کے جائیں گے تو وہ بھی ایک ایشو ہے. سو لیڈ کنونشن جو ہے ہمارا ایک ایونٹ ہے جس کے اندر ہم لیڈرشپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے پروموٹ کرتے ہیں, جس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ پینل, بڑے بڑے لوگ جو ہیں, بڑے انٹرپرینورز جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہوتا ہے ہمارا گریڈ ویک. جس طرح ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک وارم ویلکم دیتے ہیں, اسی طرح ایک بہت اچھا گریڈ ویک بھی دیتے ہیں اپنے گریجویٹس کو.
इसके बाद ये प्रोग्राम, ये एक जो इंटर्नशिप प्रोग्राम हुआ थिंकर्स ट्राइब के साथ कोलैबोरेशन में ज़ैब स्टूडेंट काउंसिल का, तो ज़ैब स्टूडेंट काउंसिल का हमेशा से एक वतीरा रहा है कि हम खुद तो इंडिपेंडेंट हैं और हम हमेशा ये ट्राई करते हैं कि हम अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भी रोशन करें और लोगों को बताएं भी कि हम पर्सनली भी बहुत स्ट्रांग हैं और हमारी यूनिवर्सिटी हमें इस चीज़ को सपोर्ट भी करती है इस चीज़ पे। सो थिंकर्स ट्राइब के साथ हम लोगों ने इसी तरह काम किया और हम फैकल्टीज़ को हमने इसके अंदर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं किया। हम स्टूडेंट बॉडी ने मिलकर ये काम किया और फिर इसके बाद हमने फैकल्टीज से सिर्फ मशवरा लिया। हमने फैकल्टीज़ को सिर्फ इसमें इसलिए इन्वॉल्व किया कि हम उनको बता सकें कि नो वी कैन डू इट, और आपने जो हमें एक ये मौका दिया एंड वी कैन प्रूव इट। और जिन लोगों ने हमें वोट किया, बिकॉज दिस इज़ एन इलेक्टेड बॉडी, जिन्होंने हमें वोट किया तो उनका वोट गलत नहीं है। सो थिंकर्स ट्राइब के साथ ये हमारा जो है एक ही कोलैबोरेशन था छोटा सा, एंड आई एम वेरी प्राउड कि ये एक इतना सक्सेसफुल इवेंट जो गया। एंड इसके ऊपर मैं एक बार फिर जो है कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा डॉक्टर कामरान सुमरू को भी कि उन्होंने हमें भी इसके लिए मदऊ किया। एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप बिल्कुल आस्क कर सकते हैं। एंड दिस वाज द ज़ैब स्टूडेंट काउंसिल एंड देयर इज़ एन ईमेल एज वेल। May I please now request Dr. Kamran Ahmed Sumro, Director, Thinkers Tribe, for the concluding note. Thank you, Rafia. Assalamu alaikum all, and I'm very much thankful to everybody here today on Saturday. Most of us have holidays, but we are still here. So I will begin with appreciation note for especially the collaborators for organizing this activity, this event today. Very much thankful to Mr. Kashif Ali from Transparency International Pakistan for sponsoring and co-organizing this whole activity, and very much thankful to Ms. Maureen Mansoor and Greenwich University for this wonderful opportunity to have this meeting and session today. And apart from that, I will not just thank the panelists for today's session who shared their wonderful ideas. They were most relevant, I must say. They were most relevant to the topic, and they shared their valuable thoughts and ideas, and that really contributed to our audience understanding, I'm sure. And now I will move towards the Young Leaders Internship Program, which we culminate today because we had more than 6 weeks internship program with our young leaders. You must be worried, what is this internship and why we have youth here, young leaders. So that's basically a different kind of internship. It's not just a corporate work. It was basically societal and community engagement based activity. We had 200 plus candidates from all Pakistan, and we had 17. I will show you the details. Like we had 30 universities on board, 15 cities we covered, 120 interns we had. We shortlisted from 250. Then we had 16 and 17 mentors, and we covered almost 17 SDGs. So this is how we try to engage our youngsters in understanding the role of sustainable development and sustainable development goals. So I must appreciate all the activities performed by our mentors. I will share a list of these are 17 different cohorts we created in different cities, and they were assigned mentors from the industry, and they were all volunteers. They had spirit to do something for the community. So you can see from Hamdard University Karachi, Hyderabad, Zabist Hyderabad, Sheikh Ayaz University Shikapur, SMIU. We had 3 cohorts from Sun Madhus Islam. This was wonderful response from the university. We had 2 groups from Islamabad, from Karachi, different universities, PF Keith, Tandojam. Even we had participation from Iskardu, Azad Kashmir. So it was pan-Pakistan activity, and I'm sure we contributed something to create awareness among the youth about SDGs. So what did they basically do? They were engaged in various activities, like they organized webinars, they organized panel discussions, workshops on different assigned SDGs. So each group was doing activities according to their assigned SDG. So you can say there were physical activities also. They organized physical events in different universities, public places.
And one of our cohorts, they went for beach cleaning activity to cover their SDG number 14. And apart from that, we also had a career counseling session for our interns. So that was not like we were just engaging them in the activities, but we had career counseling session for them at Zebest. So I'm very much thankful to our collaborators also, where we have Zebest Student Council. We had great support from Sant Madhus Islam University, who helped us organize this activity. And I'm also thankful to all our management committee members, Mr. Mansu, Mr. Avinash, Vimal, Ramesh. All of them had their wonderful thoughts and ideas. And with this, I conclude this session also, because this was connected with the SDGs. So we will continue working on that. We have different plans. We are working on research perspective. We try to connect with the students. We have collaboration. We are going to have collaboration with SDG unit, UNDP. Mr. Ahmed Hassan is here. So we are trying to target universities and colleges just to create awareness about that. But not last but not the least, what is still missing is about the corporate sector. When we have different industry visits, we find out people still don't have awareness about the sustainability development goals. So there's still need for this. अगर आप लोगों में से कोई interested in for conducting research, consultancy projects, so please consider SDGs in your mind. So thank you everybody for coming up today. Thank you very much.